Very good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel Utkal Classes. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଲାଇଭ ସେସନ ରେ. Hope my audio and video both are clear. If you all are ready, then we can start the class. Good evening, all of you. Shubham, Mr. Naik, Namita, you all are live. Thanks for joining the class on time. Radhe Radhe beta. So if you all are ready, then we can start the session. ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା. ଓକେ, ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର. କଣ ପିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର. ଓକେ, so what do you mean by solitary reaper? solitary reaper କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ? କିଏ କହିପାରିବ? what do you mean by the word solitary reaper? solitary reaper ପିଲେ କଣ? ଓକେ, solitary reaper କଣ ପିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ, solitary means କଣ? solitary means ଏକୁଟିଆ বা lonely. ଓକେ, বা solo, ତାକୁ ଆମେ କହିବା solitary. then reaper, reaper କାହାକୁ କହୁଛି? ନା କଟାଳିକୁ କହୁଛେ. ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧାନ କାଟୁଛି, ସୋ ସିଏ ହବ ଧାନ କଟାଳି. ଓକେ, ତ ରିପର କଟାଳିକୁ କୁହାଯାଏ. ସୋ ସଲିଟାରୀ ରିପର, ଏକୁଟିଆ କଟାଳି. ଓକେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି ବି ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ବୋଲି କହିପାରିବା. ସୋ ଦେଖ, this is a poem by William Wordsworth. So who is the writer here? Who is the poet here? William Wordsworth. Okay, so William Wordsworth होउछंती solitary reaper रा poet. देखो पिले, a thing of a beauty is joy forever. The signs, the scenic view of a picture's cue sight pleasure our eyes. सेठी कौन को है पिले? a thing of a beauty is joy forever. गोटे ब्यूटी, गोटे सुंदरता रो जिनिस होउची जॉय फॉरएवर, सबु बेले आनंद. सो द सीनिक व्यू ऑफ अ पिक्चर्स क्यू, गोटे सीनरी व्यू बा सुंदर व्यू. ओके, आम आखि को प्लीजेस आवर आईज. सो व्हाट डू मीन बाय प्लीजेस? प्लीजेस मीन्स आनंद दिए. So the haunting melody of a cuckoo soothes our soul. So haunting melody of a cuckoo. Okay, haunting melody of a cuckoo. Okay, CUCKOO.
Haunting melody of cuckoo. So what do you mean by the word cuckoo? A cuckoo is a type of a bird known for its distinctive call. गोटे भल साउंड बाहर करुथिबा पक्षी. Okay. The moment we take leave of these, the moment we take leave of these sight or sound, they occur to us recurringly in flashback. ओके जेतबले आमे एमितिका साइट को किछि समय छाड़ी की जाऊ ओके बा एमती किछि साउंड सुनु गोटे भल पिक्चर तमे देखिथिबो कोठी गोटे भल व्यू कोठी देखिथिबो ओके भल साउंड कोठी सुनिथिबो ओके सेई जिंसटा बारंबार आम मन को आसी थाए यस सर नो अरे पिले तमे गोटे भल व्यूटे गोटे जगह रे देखिछ ओके गोटे जगह को बुलिया जाइथिलो सेठी गोटे बढ़िया व्यू देखिलो बढ़िया झरणाटे हेची बढ़िया पानी झरुची ओके पक्षी माने सेठी राब करूछन तो से साउंड से एनवायरनमेंट तुमे पुणी घरे आसिले तुमे ताकू मन पकाओ सो द वॉइस एंड द विजन हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अस ताहाले पिलेट कोन को हाइची नाउ द वॉइस एंड द विजन वॉइस आउ विजन रो have a long lasting effect on us. So voice हो किंबा दृश्य हो ऑडियो हो बा वीडियो हो तार गोटे बहुत बड़ इफेक्ट आम उपरे पड़े दे कंटिन्यू टू बी पेरेनियल मेमोरी विथ अस सो एठी गोटे वर्ड आसिला पिले कोन ना पेरेनियल पी ई आर ई पी ई आर ई एन एन IL. So what is the meaning of a perennial? That happens often. Bele bele घटुथिबा. So they continue to be perennial memory with us. Okay. So perennial that happens often or that lasts for a long time. So बेले बेले होउथिबो आउ सबु बेल पई बहुत समय पई मन रहउथिबो ठीक अछि सो ताकू हमें पेरेनियल मेमोरी बोली कहिबा सबु बेल पई मन रहउथिबा गोटे घटना दे नेवर cease to be they never cease to be so what do you mean by cease CEASE so cease meaning कोन पिले that never cease to be सेटा केबे सरे नाही cease means कोन cease means end बोली कहि परिबा cease means end बोली कहि परिबा सेटा केबे हेले सरे नाही ओके have you ever experienced such charming beauty and music पिले तुमे केबे एमती चार्मिंग म्यूजिक और एमती चार्मिंग ब्यूटी को केबे एंजॉय करिच की किए करिची किए एमती गोटे चार्मिंग व्यू को किंबा चार्मिंग ऑडियो को एंजॉय करिची यू मस्ट हैव निहाती तुमे करिथिबो वेल लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम चलो एबे पोएम टी को पढिबा टू नोट हाउ द म्यूजिक ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल exercised an everlasting impact on the mind of the poet William Wordsworth. So it is pile Scottish girl. So what do you mean by the word Scottish girl? What do you mean by the word Scottish? Scottish रो अर्थ पिले कोन स्कॉटलैंड रो अधिवासी स्कॉटिश मीन्स कोन गोटे स्कॉटलैंड रो गोटे जियो एक्सरसाइज्ड an everlasting impact on the mind of the poet. So गोटे स्कॉटिश गर्ल रो किछिटा एक्टिविटी पोएट को मन भितरे विलियम वुड्सवर्थ को मन भितरे केमिति गोटे छाप सृष्टि करिछि केमिति गोटे छवि सृष्टि करिछि से विषय आमे पढिबा ओके बी लेट्स लिसन टू द पोएम आसो एबे आमे पोएम को सुनिबा लिसन टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रिवर
Your teacher will recite the poem or use YouTube to play the poem. Now read the poem silently to get meaning and message out of the text. चलो पढ़िबा आउ तारे कोन मेसेज अछि सेटा को देखिबा. सो कोन अछि देखो पिले. Behold her single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, oh gently pass. Behold her single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, oh gently pass. So ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି? Behold her single in the field. So behold her single on the field. So what do you mean by the word? किए कहि परिबो? ये जो पोएम टा हमें पढुचे पिले ଗୋଟେ बहुत सुंदर पोएम. ओके समस्ते पोएम रे जहाँ मु पढ़ुची ताकू समस्ते माइंडफुली सुनिबे. ओके सो देखो पिले एठी जो कुहा जाइची बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लैस. सो एठी सॉलिटरी हाईलैंड लैस किए देखो पिले बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड लुक एट हर. ओके that Scottish girl, that Scottish girl by herself over there, she cutting the grain and singing herself. ताहले कौन करची से स्कॉटिश गर्ल टा कौन करूची ना से फील्ड रे एकुटिया अछि. बी होल्ड और सिंगल इन द फील्ड दैट मीन्स से कंप्लीट फील्ड रे एकुटिया अछि. योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस. ओके she is cutting grain and singing herself. she कौन करूची रिपिंग करूची. रिपिंग मीन्स कौन करूची काटुची. ओके शस्य को काटुची एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ आउ तार एकुटिया एकुटिया किछि गीत गुणेउची गुणगुणउची. ओके stop and listen to her walk on quietly. So stop here एठी रही जाओ और जेंटली पास किंबा धीरे धीरे पास करो. हमें ता गीत को सुनिबा से कौन बोलुची. ओके देन देखो पिले नेक्स्ट alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. So पिले देखो एठी alone means कौन एकुटिया. binds means कौन she cuts and binds. binds means बांधिबा. कौन करिबा grain means शस्य. grain means कौन शस्य. ओके sings means गाइबा. sings means कौन पे sings means कौन गाइबा. तापर अछि कौन melancholy. so what is the meaning of a melancholy strain? so melancholy strain पिले होची melody tune. कौन melody tune. ओके जोटा गोटे सैड सॉन्ग कहि परिबा melancholy. ओके Oh, listen for the vale profound. Oh, listen for vale profound. Okay. So
एटी भेल प्रोफाउंड कहा उद्देश्य रे कुहाइछि भेल पई भैली उद्देश्य रे कुहाइछि उपत्यका उद्देश्य रे कुहा जाइछि ओके तो भेल प्रोफाउंड होउछि कोन पिले ना डीप वैली ओके सब जाक वर्ड मीनिंग जहा लिखुची ताकू लेख देन एठी अछि ओवर फ्लोइंग सो ओवर फ्लोइंग रो अर्थ पिले कोन ओवर फ्लोइंग बहुत अधिक ओके तो आलोन से कौन करची एकुटिया से झियोटी काटुची एवं बांधुची एंड सिंग्स ए मेलांचोली सॉन्ग गोटे सैड सॉन्ग गाउची ओ लिसन फॉर भेल प्रोफाउंड ओके समस्ते आकु सुन ओके से डीप वैली रे समस्ते ताकु सुन इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड सो कौन होची से पूरा डीप वैली ता साउंड रे ओवरफ्लो होची ओके नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट सो नाइटिंगेल पिले कोन समस्त जानी थिवो नाइटिंगेल अर्थ की कहि परिवो नाइटिंगेल होची गोटे चढ़ेई ओके नाइटिंगेल होची गोटे चढ़ेई रो ना चॉन्ट मींस कोन पिले चॉन्ट मींस की कहबो चैंटिंग जानी छो पिले चैंटिंग जानी छो पिले चैंटिंग रु चॉन्ट हेची ओके रिपीट और सिंग ओके मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ओके एठी कुआ गला मोर वेलकम नोट्स टू मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड सो एठी वेरी बैंड्स अर्थ कोन ओके पिला माने एथरे बहुत हार्ड वर्ड अछि ओके तो समस्त हार्ड वर्ड गुडा को नोट्स करिवो ओके सो एठी जो कुआ गला मोर वेलकम नोट्स टू योरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम स्टडी हॉर्स अमंग अरबियन चैट्स सो देखो पिले एठी जदी कहिबा आम पाखरे एठी अछि वेरी बैंड्स सो वेरी बैंड्स रो अर्थ कोन के कहि परिबा पिले वेरी बैंड्स होची ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वेरी बैंड्स कोन ग्रुप ऑफ ट्रैवलर यात्री मानकर ग्रुप को वेरी बैंड्स कहूची सो नो नाइटिंगेल डिड इवन चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड सो देखो पिले से म्यूजिक ता कौन थिला बहुत सुदिंग थिला बहुत कंफर्टेबल थिला ओके को मानंग पई जो माने क्लांत ट्रैवलर थिले ओके जो क्लांत है कि जो ट्रैवलर माने चाली चाली आसुथिले सेमानंक पई से गीतटा बहुत सुदिंग थिला एवं बहुत कंफर्टेबल थिला ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट पिले माने सैडी हॉन्ट मींस कोन की कहि परिबो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सैडी हॉन्ट सैडी हॉन्ट्स माने जोटा पूरा माने पूरा छाई युक्त ओके
सैडी ओके सेड रु हेची सैडी सैडी मींस कोन छाई हॉन्ट मींस कोन बोले ओके हॉन्ट मींस होची घर टाइप रो ओके कुडिया टाइप रो देन देखो अमंग अरेबियन सैंड्स कोठी पिले माने को जगह अमंग द अरेबियन सैंड्स ओके अरेबियन रो सैंड्स रे सो अरेबियन रो बाली रे कौन है से ट्राभेलर माने जाउछंती एवं पूरा से जगह पूरा छायादार अच्छी से गीतटा से झीटा से धान काटुची गीत बोलुची एवं एमाने जो ट्राभेलर माने थिले एमाने जो जाउथिले से माने बहुत क्लांत थिले तो ता गीत सुनिकी एमानंकु बहुत आराम लागिला ओके देन देखो पिले ए वॉइस सो थ्रिलिंग नीर वाच heard okay never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest horizons okay so एटी कौन कुआ पिले देखो कुआ जाइए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड वॉइस टा केमिति थिला बहुत थ्रिलिंग थिला जहाकू केबे आगुरु सुना जाई नथिला भलिया वॉइस थिला यस और नो then in springtime from the cuckoo bird springtime रे cuckoo bird ठारू breaking the silence of the siege so तार वॉइस टा एमिति थिला जे कोन करथला ता वॉइस ना सी रो साइलेंस को ब्रेक करूथिला ओके सो देखो ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड हियर मींस केबे सुना जाई नथिबा केबे सुनी नथिबा ओके देखो पिले तो आमे एठी देखले कोन ना नाइट एंगल केबे सेमती यात्री मानन को पई से भलिया गीत गाइनी कि तमरो जो रहिला कुको बार्ड भी केबे सेमानन को पई सेमती से ट्रैवलर्स मानन को पई केबे सेमती गीत को गाइनी ना नाइट एंगल ना कुको बार्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी तो कौन करची जो सी रो जो साइलेंस अछि ताकू से भांगुची बा ब्रेक करूची ओके so will no one tell me what she sings will no one tell me will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far of things and battles long ago. देखो पिले एठी कुहा जाईची कोन
कौन केही कही पारिबेनी से कौन गाउची मे बी सी सिंग्स सैडली फॉर ओल्ड ट्रेजेडीज एंड एंशिएंट बैटल्स मे बी से को गीत गाउची ना तार सैडली फॉर ओल्ड ट्रेजेडीज एंड एंशिएंट बैटल्स आगुरु हेइथिबा युद्ध आउ सैड ओल्ड ट्रेजेडीज विषय से गाउची और मे बी द सॉन्ग इज हम्बलर अबाउट टू एवरीडे थिंग्स और आउ कौन हेइथिबो प्रतिदिन तमाम रो थिंग्स जहाँ प्रतिदिन होउची बा जंत्रणा द पेन एंड सरो दैट एवरीवन एंड्योर्स जहाँ आमे दिन प्रतिदिन रे आमे कौन करूचे जो सुख हो जो दुख हो आमे दिन प्रतिदिन आमे अनुभव करूचे मे बी से गीतटा ता उपरे आधारित किंबा किछि युद्ध उपरे बैटल उपरे आधारित ओके बट एतिके जना पडुथिला जे से गीतटा कोन थिला सैड सॉन्ग थिला ओल्ड थिला एवं अनहैप्पी थिला यस और नो कोन हब्राइज मीन्स पचारुच ना कोन सेटा हब्राइज नो सेटा अछि हब्राइट्स ओके सेटा अछि हब्राइट्स सो हेब्राइट्स रो अर्थ कोन ओके तो देखो पिले हेब्राइट्स बा हब्राइट्स को तार अर्थ होउची कोन ए ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड सो स्कॉटलैंड रो आइलैंड्स को हब्राइट्स एठी कुहाइछ ओके देखो आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड रो आइलैंड को हमें हब्राइट्स बोली कहिचे क्लियर देन देखो और इज इट सम मोर हम्बलली familiar matter of today some natural sorrow loss or pain that has been and may be again so देखो whatever she was singing about the young woman sang as though her song would never end I saw her singing while okay देखो पिले एठी कोन कुआ जायछि हाँ क्लियर ना है देखो और इज इट सम मोर हम्बलली फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे ओके से कहूँ से गीतटा कौन हूँ गोटे हम्बल ले हेई पारे किंबा फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे आज दिन किसी गोटे मैटर हेई पारे किंबा सम नेचुरल सरो ओके किछि प्राकृतिक दुख हेई पारे किंबा किछि लॉस हेई पारे किछि हरई थिबो किंबा किछि जंत्रणा हेई पारे दैट हैज बीन सुडा हेई सारिछि बा पुणी आउ थरे हबो ओके व्हाट एवर द थीम से थीम जहाँ भी हो ना कहीं द मेडन सैंग मेडन मीन्स कौन मेडन मीन्स कौन कुआरी झियो ओके मेडन सैंग आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग सो मेडन जो गीत गाउची से सॉन्ग रो किछि एंड नाही ओके आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क मु ताको देखिथिली केतबेले ना से तार काम कला बेले गीत गाउथला एंड अदर द सिकेल बेंडिंग अदर द सिकेल पिले सिकेल मींस कोन एंड सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिकेल
So sickle means हसिया, okay, हसखुसिया. Bending means कौन? Oh, sorry. And other the sickle. I saw her singing at her work and other the sickle bending. Okay, आउ समस्ते, okay, समस्ते कौन करथिले? सिक्केल बेंडिंग माने नई की दारे सी कौन करथिला? नई की दारे काटुथिला. Okay, bending. Okay, I listened motionless and still. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, sickle means da beta, ठीक है, sickle means da, and as I mounted up the hill, the music in my heart bore long after it was heard no more. Okay, so से जेतबले से जागारु पास करी जाइछंती, से जागारु जेतबले माउंटेड ऑफ द हिल से तबले पहाड़ ऊपर को चढ़ी जाइछंती, द म्यूजिक इन माय हार्ट बोर, तांको हार्ट रे कोन होउची, से म्यूजिक टा शुभुची. लॉन्ग आफ्टर इट वाज योर नो मोर. ओके, आउ किछि समय परे सेटा आउ तांकु सुना गला नाही. सो पिले माने देखो एठी जो हमर टी कंफ्यूज हेई गला जे आई सॉ हर सिंगिंग, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड अदर द सिकल बेंडिंग. देखो पिले कौन कही आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क. ओके, मु केतेबेले ताको देखिली ना से काम करूथिला आउ गीत गाउथिला. कौन काम करूथिला ना नई की दारे किछि काटुथिला. यार अर्थ होची नई की दारे किछि काटुथिला. कहा कौन काटुथिबो? शस्य काटुथिबो. आई लिसन टू हर विदाउट मूविंग. मु ताको कौन करिछि? आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल. मु सुनी की मोशनलेस हेई जाइछि आउ स्तब्ध हेई जाइछि. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल. मु सेठी स्तब्ध हेई जाइछि. एंड आज आई वाल्ड ऑन अप ए हिल. जेतबेले मु गोटे पहाड़ ऊपर को चढ़ीछि, आई कैरिड हर म्यूजिक इन माय हार्ट. मो हार्ट रे ता म्यूजिक ताकू नेई की पहाड़ ऊपर को चढ़ीछि. एंड आई स्टिल डू लॉन्ग आफ्टर आई स्टॉप्ड हियरिंग इट. ताकू सुनी गला परे लॉन्ग आफ्टर इट वाज योर नो मोर. ओके, से जेतबेले बहुत दूर को चली जाइछंती सेतबेले तांकू आउ सुना जाई नाही. तो से सेठी सुनी की सेठी स्तब्ध हो जाइतिले एवं से जागारु गला परे तांको हार्ट रे से सॉन्ग टिका पुनी सुना जाउतिला. ओके, लॉन्ग आफ्टर इट वाज नो मोर. तांको कान को सुना न गले मध्य तांको हृदय को से गीतटा सुना जाउतिला. तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7th एप्रिल. सो विलियम वर्ड्सवर्थ केबे जन्म नैछंती ना 7th एप्रिल रे. ओके, 7th एप्रिल 1770, 1770 7th एप्रिल रे इन ककर माउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड. इंग्लैंड रो लेक डिस्ट्रिक्ट रे से जन्म नैछंती. ही इज रिगार्डेड एज वर्शिपर ऑफ नेचर. तांकु नेचर रो पूजक. वर्शिपर मींस कोन? पूजक. तांकु नेचर रो पुजारी बोली कुहा जाय. लव ऑफ नेचर इज मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री. तो जो पोएट्री लिखंती तांको पोएट्री रे विशेष लव नेचर प्रति शो करे. He wrote about ordinary men and women in the language of ordinary people. से साधारण पुरुष महिला ऊपर गीत लिखंती साधारण भाषा रे. For him
Poetry is the spontaneous overflow of a powerful feelings. So for him तांको पाई poetry होउची कोन ना spontaneous overflow of a powerful feelings. Powerful feelings रो overflow spontaneous माने continuously overflow powerful feeling. Okay, arising from emotions recollected in tranquility. So what do you mean by the word tranquility? Tranquility कहले कौन बुझुच? What do you mean by the word tranquility? शांति. Okay, emotions recollected in tranquility. So जो आमर इमोशन रही छि आमर जो माने थिंकिंग रही छि आमर जो इमोशन मन भीतर जो इमोशन रही छि भावना रही छि ओके ताकू से रिकलेक्टेड करिकी शांत ओके शांत करंती बा शांति दिए ओके सही उद्देश्य लिखा है he died at a रिडल माउंट एंड गार्डन्स से कोठी मृत्युवरण करचंती he died at a रिडल माउंट एंड गार्डन्स रिडल माउंट गार्डन रे ओके सो यूनाइटेड किंगडम ऑन अप्रैल 23 1850 अप्रैल 23 रे से डेथ करिसंती कौन जानी ना बेटा In the present poem, the solitary report, what Wordsworth depicts a solitary highland lass, her sweet song, and the profound effect of the song on him. The poem is one of Wordsworth's first lyrics. So, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ସଲିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ ବା ଗୋଟେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାସ୍ ଓକେ ର ସୁଇଟ୍ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି देन एठी किछटा डिफिकल्ट वर्ड अछि पिले देखो behold means to look at or see somebody or something काहा को देखिबा yon माने over there ओके सेही समय रे solitary means single highland lass माने a girl who lives in the highland जो झियोटा माउंटेन रीजन रे रहउथिबो ना ना बगीचा रे से डायड हे नांती ओके से जागाटर ना सेया माउंट एंड गार्डन्स ओके रिडल माउंट गार्डन्स से जागार ना होची सेया देन देखो तो हाईलैंड लैस ए गर्ल हु लिव्स इन हाईलैंड माउंटेन रीजन रे जो जियो रहउथिबो ताको हाईलैंड लैस कहैछि मेलांचोली स्ट्रेन सैड सॉन्ग उद्देश्य रे कहैछि भेल वैली पई उपत्यका पई कहै जाइछि पिले तो प्रोफाउंड डीप हैविंग और कम फ्रॉम ए ग्रेट डेप्थ गोटे हृदयर गभीरतार आसुथिबो प्रोफाउंड चॉन्ट बस गाइबा बा चांट करिबा देन वेरी मींस वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर लॉन्ग टाइम ओके बहुत समय पर्यंत काम करिके थकी पड़िबा बैंड ए ग्रुप ऑफ पीपल हंट ए प्लेस विजिटेड फ्रीक्वेंटली हंट मींस कोन गोटे जागा को बारंबार विजिट करिबा सेडी हंट a place with water and trees in desert for rest and relaxation okay पूरा छायादार गोटे रेस्ट नेला भलिया जगह Arabian sands the desert of Arabia the Middle East okay Arabian sand होच कोन desert जोटी सब मरुभूमि ऑफ Arabia then देखो fastest orbites the most remote group of islands that lies to the northwest of Scotland so Scotland ro island को हमें orbites बोली कहो then plaintive numbers sad music okay then humbly lay ordinary song sickle a tool for cutting grass or paddy motionless without movement Scotland a country which is part of United Kingdom रो गोटे country को बुझौछि okay so एठी किछटा क्वेश्चन अछि एबे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा की हाँ गोटे क्वेश्चन कुह कौन क्वेश्चन अच्छी
हाँ आमको A1 हेबाकु हेले केते आवर्स हार्ड वर्किंग करने को पड़ो। हाँ देख पिले मुझे कहीदे गोटे जिनस A1 रो मीनिंग कौन देख पिले आम गोटे रैंक को होल्ड करवा। सो आमर जो पाठ रही मुख्य जिनस आमको सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने को पड़ो। कॉन्सेप्ट वाइज सब जिनस को पढ़ा पड़ो। इंग्लीश रे जमी गोटे पोएम पढ़ले या भितर बहुत जिनस अच्छी सेमती ग्रामर सेमती मैथ रो सब जिनस आमर फास्ट फंडामेंटल क्लियर हवा दरकार। आउ बहुत कौन करवा दरकार आमर हूँ कौन प्रैक्टिस करवा दरकार। ओके जिते प्रैक्टिस करि परिबो गोटे विषय रु तुम शह शह क्वेश्चन दी चारिटा टेस्ट पेपर तुमको रिवाइज करिया पड़ो। बाकी रहिला केते समय हार्डवर्क करिवो। हाँ जहाँ तुमको हार्डवर्क करिया पड़ो। देख पिले तुमको जहाँ मिनिमम 8 घंटा परिश्रम करिया पड़ो। ओके सेल्फ स्टडी ट्यूशन्स को छाड़ी 6 ରୁ 8 घंटा 6 घंटा बेसी 8 घंटा बहुत हो जाउची बट सेल्फ स्टडी केवल 6 घंटा करिया पड़ो। तुमको सेल्फ स्टडी 6 घंटा करने को पड़ो। ओके सेल्फ स्टडी 6 घंटा कले तुम डेफिनेटली A1 रखिपर। माने ट्यूशन स्कूल बाद तुमको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करने को पड़ो। ओके सो देखो एबे हम क्वेश्चन आंसर किछटा करूचे। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम रो सेंट्रल आइडिया कौन। रिपर कैन सिंग लाइक बर्ड्स स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रिच हार्वेस्ट मेक्स द रिपर हैप्पी। तो यार अर्थ पिले कौन देख सी कही पोएम कौन अपील करुची किए कही परिबो। हम पाखरे चारिटा ऑप्शन अछि। रिपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड रिपर कौन बार्ड परी गीत गाउची। स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल समस्त को स्वीट म्यूजिक। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रिच हार्वेस्ट मेक द रिपर हैप्पी। ओके तो स्वीट म्यूजिक अपील्स टू देखो पिले गोटे जिनस एठी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आमे जो जिनस को करू जो भल जिनस आमे देखू सेटा सब बेल पई एभर लास्टिंग होइकी रहे। देन देखो द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश को जगह पोएमटा है द माउंटेन रीजन द ऑर्बाइट्स आइलैंड द ब्रिटिश आइलेस एंड द अरेबियन डेजर्ट। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज किए कहि परिबो द सेटिंग ऑफ द पोएम। आउ किए कहि परिबो। सी डी देखो पिले द सेटिंग ऑफ द पोएम हूँ द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। हाँ द माउंटेन रीजन ऑफ द स्कॉटलैंड हम। देन देखो हु आर द पीपल डिस्क्राइब इन द पोएम। सो पिले माने ए पोएम रे को लोक माने डिस्क्राइब हेइछन द पोएट एंड द सॉलिटरी रिपर
are described in the poem. Okay, who are the people described in the poem? The poet and the solitary reaper. Who does the expression highland lass refers to? Why does he describe her as you solitary highland lass? So एठी highland lass काहाकू कुहा जाइछि आउ काहेकि कुहा जाइछि 4 नंबर क्वेश्चन. Here highland lass refers to the solitary reaper. एठी से solitary reaper को highland lass बोली कुहा जाइछि. Whom the poet saw in the valley, जाहाकू poet valley रे देखिछंती. Okay, the poet describe her as a young solitary highland lass. Poet ताकू young solitary highland lass कहिछंती because the girl was alone over there. पूरा से valley रे से गर्ल टा एकुटिया थिला. ओके, सेथि पई ताकू alone young solitary highland lass बोली कुआइछि. Besides the knew that the girl must be a native of that mountain region. ओके, से जेहेतु हाईलैंड लैस कहछि माने कंट्री सॉरी माउंटेन रीजन रो झियोटा एंड एकुटिया थिला. सो सॉलिटरी हाईलैंड लैस सेथि पई ताकू कहछि. What is girl doing? What is the girl doing? What is the girl doing? Girl कौन करूथिला? The girl is cutting grains and binding them. झीटी कौन करूथिला? ग्रेन को कट करूथिला आ ताको बांधुथिला. At the same time she is singing song. सेही समय रे से गीत मध्य गाउथिला. ओके, देन 6 नंबर को आसो. Who does the poet say stop here or gently pass? Okay, who does the poet say stop here or gently pass? पोएट एठी काहाकू कहिचंदी एठी रुह किंबा धीरे धीरे पास करो. से कौन पई एमती कहिचंदी? द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द गर्ल ता 3 नंबर द पोएट हिज फ्रेंड्स एंड स्कॉटिश गर्ल. हबो किछ असुविधा नै. हबो तांको सांग माने से ट्रैवल ग्रुप थिला, पोएट थिले, ट्रैवलर्स ग्रुप, पोएट एंड द स्कॉटिश गर्ल. हबो हबो. The melodious song of the girl appeals to the poet. He says, stop here or pass gently to passers by. He says so that the girl will not be disturbed. So एपरि से कहिचंती जे से झियर गीत तांको अटकई देछि एवं से कहिचंती जे तुमे धीरे धीरे समस्त जाओ जेमति से झियरटी डिस्टर्ब न हो. ओके, तो 7 नंबर देखो. Speak out the words which tell that the girl does not have anyone by her side. Okay, तो को जगह रे को वर्ड रे तुमे जानि परछो जे से जियो पाखरे आउ केही नथिले बोली. द वर्ड लाइक सॉलिटरी को वर्ड रो जानि परछो ना सॉलिटरी यूज होईची. सॉलिटरी. ओके, SOLITARY एंड सिंगल यूज होईची, alone यूज होईची. ए सब वर्ड रु जना पड़ुची जे से झियोटी से भ्याली रे एकुटिया थिला. देन देखो पिले 8 नंबर. व्हाट इज द टोन ऑफ हर सॉन्ग? हैप्पी, सैड, सूदिंग और सिंपैथेटिक. सो ता टोन टा केमिति थिला? ओके, द टोन ऑफ हर सॉन्ग इज सूदिंग. ओके, ओवरफ्लोइंग विथ साउंड. एक्सप्लेन. एटी कहै छै ओवरफ्लोइंग विथ साउंड आको एक्सप्लेन करिया कहै छै. ओके, the poet finds a young girl singing an enchanting song in a loud voice. The entire valley is flooded with her beautiful voice. तो एटी पोएट कहछन से झियोटी बहुत सुंदर गाउथिला एवं तीव्र ध्वनि रे गाउथिला जोथि पई से एंटायर वैलीटा पूरा ता स्वर रे फुल अप हो जाइथिला. ओके, the solitary reaper song remind the poet of other singers. Who are they? solitary reaper रो गीतटा पोएट को
ओके कौन करची सॉलिटरी रिपर सॉन्ग दा रिमाइंड करची पोएट को अदर सिंगर मानक विषय रे से सिंगर माने किए पिला माने एठी हबो नाइट एंगल एंड कुको दीटा चढ़ई विषय रे मन पकईची गोटे होची नाइट एंगल एंड कुको CUCKOO कौन एठी गोटे लिखिले अमिता सार 8 नंबर टा सैड हबनी कि से कौन कहछि टोन ऑफ द सॉन्ग तो टिके पोएम को पळेबा एबे देखिया से त टोन कथा पचारछि थीम कथा कहितले यदि कहिथाना थीम कोन ना सैड थीम थिला माने सॉन्ग टा सैड थिला आई लिसनड मोशनलेस कंटेंट द म्यूजिक आई बोर अच्छा देखो तो व्हाट एवर द थीम से थीम जहाँ भी थाउ ना कहीं द मैडन सॉन्ग आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग आई सॉ हर सिंगिंग एट वर्क एट अच्छा और इज इट सम मोर हम्बली ले familiar to other that has been and maybe again will no one tell me what she sings perhaps plenty numbers slow or old unhappy far of things and battle songs okay a voice of a thrilling need never was heard in springtime from the cuckoo bars, breaking the silence of the horbite. They go to play thrilling. A voice is so thrilling. Okay, so thrilling habo. Tone night angle cuckoo सेटा thrilling habo. Thrilling, soothing एवढा habo. तो यदि theme କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ sad song କହିଥାନ୍ତେ. तो 11 नंबर को आस पिले 11 नंबर क्वेश्चन आम पाखरे कौन अछि हु सिंग्स वेलकम नोट्स वेयर फॉर whom what for पिलाने हु सिंग्स वेलकम नोट्स किए गाइछि द नाइट एंगल सिंग्स वेलकम नोट्स हाँ थ्रिलिंग मीन्स रोमांचक राइट तो हु सिंग्स वेलकम नोट्स किए वेलकम नोट गाइटी वेलकम नोट किए गाइची द नाइट एंगल ओके हुज वॉइस इज थ्रिलिंग कहार वॉइस थ्रिलिंग कहार वॉइस थ्रिलिंग द वॉइस ऑफ द कुको बार्ड कहार कुकू बार्ड रो वॉइस थ्रिलिंग वेयर डज इट सिंग व्हेन कोठी इट सिंग्स इन द रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड of the sea in Scotland. Of the sea in Scotland. Okay. So remote group of island of the sea in Scotland. Scotland island. Who does Wordsworth compare the farmer girl with it? Why? तो फार्मर गर्ल को पोएट कहा संगे कंपेयर कर
तो से फार्मर गर्ल को पोएट कहा संगरे कुको आउ नाइट एंगल संगरे कहा संगरे कुको आउ नाइट एंगल संगरे ओके कंपेयर करा देन देखो कहीं कंपेयर करा कहीं ना ता सॉन्ग टा बहुत मेलोडियस थिला बिकॉज हर सॉन्ग वाज मेलोडियस आज ए कुको एंड नाइट एंगल द peasant's girl song is not intelligible to the poet because take the right answer 15 number आंसर कौन हम her song in delicate he does not understand he is far away to hear the words of the song her voice is not clear as he humming the words her voice is too soft for him to get तो ये 1 नंबर हम 15 नंबर 1 हम हाई What does the phrase humbly lay means? पिलाने humbly lay रो अर्थ कौन? Ordinary song. Ordinary song. The expression plaintive numbers refers to sad music. Pick out another phrase in the poem carrying the same meaning. So plaintive numbers रो जेमती meaning होची plaintive रो meaning होची plaintive numbers रो जे sad music ते भले आउ कौन word अच्छी melancholy string कौन अच्छी melancholy string then 18 number देखो what does the poet mean to say as if her song could have no ending what does the poet mean to say as if her song could have no ending as if her song could have no ending एमिति कही कि लेखक कौन कहबा को चाहिचंती पिला माने एटा बी हबो सी कीप्स ऑन सिंगिंग एंड सीम्स नॉट टू एंड से गीत गाई चलची जेमिति तार शेष नाही ओके ओके ठीक अछि नो इश्यूज बेटा यू आर ट्राइंग दैट इज ए गुड हाबिट ओके तुम्हें चेष्टा करूच सब प्रश्नर उत्तर देवा पई सेटा होची गोटे बहुत बड़ हाबिट आउ एटा ही गोटे भल स्टूडेंट रे गोटे होची कोन ये होची गोटे माने पॉजिटिव साइन ओके सो कीप डूइंग दैट ओके देन देखो 19 नंबर द पोएट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज द पोएट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज पोएट शुणी कि मोशनलेस हो जाइछन्ती आ स्तब्ध हो जाइछन्ती कौन पई पिले चारटा ऑप्शन अछि कोठा हबो 19 नंबर द रिच मेलोडियस एगुडा हबो द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल्ड्स हिम मेस्मराइज एंड स्पेल बाउंड तांकर जो बहुत सुंदर गीत तांको सेठी बांधी पकेछि ओके तो ये हबो आंसर 20 नंबर देखो कितने अच्छी 20 नंबर देखो हाउ डिड द सॉन्ग अफेक्ट द नैरेटर केमिति से सॉन्ग दा नैरेटर को अफेक्ट करछि पहिले सुनो मन देखि नो डाउट द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर वाज मेलोडियस ओके सॉलिटरी रिपर रो सॉन्ग ता मेलोडियस थिला एथरे किछि डाउट नाही द नैरेटर वाज डीपली इम्प्रेस्ड नैरेटर बहुत इम्प्रेस होइछन्ती बाय द स्वीट टोन ऑफ द गर्ल रो सुंदर टोन द्वारा इट हेल्प्स हिम जोटा तांको मेस्मराइज कराइछि
आउ एवं स्पेल बाउंड से जगार स्तब्ध कर देछि ओके देन 21 नंबर ना सी हबनी ए हब 21 number in stanza 1 and stanza 2 four words and phrases have been used to show that the girl working in the field is without any by her pick out these words and phrases so देखो stanza 1 और stanza 2 रे जो word कुआ आइची जे झियोटी एकुटिया काम करची सेउडा को बाहर करो ओके तो सेइगुडा को पुनी हमें सिंगल कहि परिबा सॉलिटरी कहि परिबा बाय हरसेल्फ कहि परिबा तापरे आलोन कहि परिबा कट्स बाइंड्स एंड सिंग्स कहि परिबा ओके देन 22 नंबर द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग कंटेन्स सैडनेस तो एटी जो कहली ना थीम अछि थीम होची सैडनेस व्हाट अदर वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैड सैड जगह रे आ कोन कोन हमें यूज करि परिबा देखो बिले सैड जगह रे हमें मेलानकोली यूज करि परिबा प्लेंटिव यूज करि परिबा अनहैप्पी यूज करि परिबा ओके सरो यूज करि परिबा ओके देन देखो 23 व्हाट आर द टू सिनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल पई दीटा सिनोनिम कोन यंग गर्ल पई दीटा सिनोनिम 23 द टू सिनोनिम फॉर द यंग गर्ल आर लैश एंड मेडन कोन लैश यंग गर्ल पई लैश और मेडन MAIDEN the three other words are used to mean song what are they तो सॉन्ग पाई तीनटा वर्ड यूज होईची से तीनटा वर्ड कोन सॉन्ग पाई जो तीनटा वर्ड यूज होईची मु सेटा कहूचे बे देखो एठी लिखि दूचे सॉन्ग पाई 24 नंबर रो ओके 24 नंबर आंसर देखो नोट्स गोटे होची नोट्स आ गोटे होची स्ट्रेन आ गोटे होची नंबर्स और ले ओके देन 25 देखो ए melancholy strain in stanza 2 means a sad song find out another phrase in stanza 5 with similar meaning तो melancholy रो similar meaning stanza 5 रे कोन अछि plaintive numbers कोन अछि plaintive numbers then which word in stanza 5 express the poet's guess perhaps okay perhaps word 26 number perhaps perhaps ओके सो फाइनली 26 टा क्वेश्चन रो आंसर हमें डिस्कस कले तार 24 नंबर ओके कहि दोछ जस्ट वेट the other words used to mean song पिला माने song पई पोएम रे आउ तीनटा वर्ड यूज हेछि ओके से तीनटा वर्ड कोन सॉन्ग को नोट्स बोली कुहा जाइछि वेलकम नोट्स कुहा जाइछि देन स्ट्रेन्स कुहा जाइछि देन ले भी कुहा जाइछि ओके नोट्स और स्ट्रेन ले सॉन्ग पई तीनटा वर्ड जोटा यूज हेछि से तीनटा वर्ड एठी मु लिखली ओके
एबे बुझी पारे तो 24 क्वेश्चन बुझातु ओके 24 क्वेश्चन देखो थ्री अदर वर्ड्स यूज टू मीन सॉन्ग सॉन्ग को बुझेइबा पई आउ तीनटा शब्द व्यवहार कराई हां ठीक अछि बुझी पारलो सो पिला माने हमें आज 26 टी क्वेश्चन डिस्कस करले आई होप समस्त बुझी थिबे एथि सहित ए चैप्टर रे आ किछि भी डाउट नथिबो मु एटा आशा करबी जदि क्लास भलो लागिछि समस्त कमेंट सेक्शन रे क्लास रिगार्डिंग जहाँ फीडबैक अच्छी सार केमती पढ़ेले पाठ केमती लगुच सेटा जनइब आ सबू तुम सांग मान को कुह टाइमली आसिक क्लास जॉइन करंतु एंड जो पिला माने वीडियो देखुचंती समस्ते वीडियो सेशन को लाइक कर देबे ओके एंड पुणी काली सकाळे क्लास अच्छी ज्योमेट्री रो ओके ज्योमेट्री रो क्लास हबो एंड काली इवनिंग रे क्लास अच्छी इंग्लिश ग्रामर ओके इंग्लिश लिटरेचर रो दीटा क्लास सरी गला दीटा विषय आमे लेटर टू गॉड पढ़िले ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पढ़िले सॉलिटरी रिपर पढ़िले ओके तीनटा विषय ऑलरेडी हमर सरी गला ठीक अछि इंग्लिश रो तीनटा चैप्टर कंप्लीट हैला सेपटे हमकु ग्रामर को बहुत जल्दी पढ़िबा को पड़िबो ओके ग्रामर पढ़िया को पड़िबो ठीक अछि काली ग्रामर क्लास हबो शुक्रवार शनिवार तुम्हारा ग्रामर देन मॉर्निंग रे तो मैथ क्लास होउची so thank you everyone thank you for joining the class may god bless you with knowledge happiness and whatever you want तुम्हें जहाँ चाहो भगवान तुम समस्त को सेया दियंतु ओके थैंक यू एवरीवन जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी समस्त कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ रे फुल कर दे आउ किसी दरकार नहीं ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू बेटा थैंक यू